Welcome friends, this 7 p.m. biggest story tonight, Friday. Hectic parleys continue insofar as BJP's pick for chief ministers in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. The party has announced observers for these states led by Rajnath Singh for Rajasthan, where the intense focus is. Apart from that, there was expulsion of Trinamool Member of Parliament Mahua Moitra from the Lok Sabha in the cash for query scandal after the ethics panel of Parliament found her to be involved and after some tempestuous remarks coming in from Mahua outside the Parliament. That's going to be focused the rest of the evening, but in this bulletin we are going to put under our lens discovery of about 250 crore rupees from the vaults of an industrialist who also happens to be a member of Parliament of the Rajya Sabha from the Congress party. Let's begin with the headlines first. Under a scanner for payoff scandal, Mahua Moitra expelled from the Lok Sabha. Mahua claims foul play, says was not allowed to speak in Parliament. Opposition protests Mahua expulsion alleges vendetta politics by the BJP. 250 crores cash seized by Income Tax Department in Congress-linked raids. Prime Minister slams opposition, says every penny will have to be returned. Symbol says Assam was part of Myanmar. Assam government, it's back. All right, and let's begin this bulletin with the breaking news development on the story that was already under our lens, which is unaccounted cash amounting to rupees 250 crores getting recovered during searches carried out by the Income Tax Department against an Odisha-based distillery group and its linked entities in Bhubaneswar. The raids that were launched on December 6 and are still underway. That's 3 days. The Congress links have now emerged to the mega cash haul. IT department is still counting the cash that has been seized. The department had carried out searches in Odisha, Jharkhand, and in one case in Kolkata. So far, no official statement has been released. But joining me to understand what's really happening, who's behind this, Shravan Sen, senior editor on investigations. Shravan, what are the details you can share? Who's this person? What are the Congress links, so that people understand what's really happening? Well, in fact, Abhishek, let me first begin with putting out details of the raids that were carried out by the Income Tax Department, which was spread over 2 days. On Wednesday and Thursday, we saw several locations in Jharkhand, in Odisha, where these searches were being carried out. As we speak, the counting is still underway. The last that we spoke to some of our sources within the agency to get a better understanding of how much has been seized, we were given to understand that it had already touched 210 crore rupees. That is expected to only go up in the coming few hours as the counting still continues. As you can see, most of these images that have been accessed by Republic TV also goes on to indicate that large amount of the cash that has been seized by the Income Tax Department were basically stashed in almirahs. In fact, we are being told that distilleries that have come under the scanner of the Income Tax Department. Let me just put out some of the names that have been we've been given by our sources. One, this is the Boudh Distillery Private Limited. This is again headquartered in Bhubaneswar, has got multiple offices spanning across the state of Odisha. Now, what we are being told is that there are political connections. Important to underscore at this point in time. The Income Tax Department, however, has not made any mention of the political connections. However, they indicate that they are looking into the political connection, because it turns out that Rajya Sabha parliamentarian Dheeraj Sahu, who is based in Odisha, is under the scan of the Income Tax Department, and they're essentially looking at the connections with this particular distillery.
Apart from that, we're also being told that they are looking at searches that have been carried out in Jharkhand, where the searches have been carried out. Important to point out here is that they are largely looking at the tax evasion matter. Right. Once, remember, this case is taken up by the Income Tax Department. There is a possibility that a predicate offence is established, and thereafter other agencies will also be looking into the fact that whether at all there is any money laundering to begin with. As far as the tax evasion aspect is concerned, they are looking at a period of roughly about 2.5 years with regards to this particular distillery, and whether at all there are other connections with these distilleries and companies that have been linked to the Congress parliamentarian. All right, Congress MP from the Rajya Sabha, Dheeraj Prasad Sahu, comes from an industrial background, a long history with the Congress party also, and this seems like a case of tax evasion. And Shravan, as you explained, that this can lead to a predicate offence, in which case other investigative agencies can also get in. But just quickly, last question, is the counting is still on? I mean, is there going to be a surprise beyond 250 crores, or is it coming to an end? Well, in fact, the last update that I got, Abhishek, was roughly around 5:15 this evening. We were given to understand that the counting was still underway, and the number that we have put out right now on our screens, this is roughly about 210. It could very well go up because counting machines were also called in so that the process could be completed as soon as possible. A consolidated report has not been presented before the CBD to hear in the national capital. Once that actually happens, one would certainly expect that the Income Tax Department would be putting out an official statement. So to underscore the point, so far the Income Tax Department hasn't put out an official statement. Once that happens, it's very unlikely that any names would be put out typically of what the Income Tax Department essentially does. But by way of sources that what we can confirm, and with boots on the ground, what we've been able to pick up is that there are political connections that are being probed by the Income Tax Department. All right, thank you so much, Shravan. On that note, in fact, we stay with this story because hitting out, the Prime Minister slammed the opposition, saying that every single penny will have to be returned. The BJP is also raising the mega cash haul. In fact, the Prime Minister went public, posting pictures of the cash haul and tweeting that this is the real face of the Congress party. BJP in turn picked up taps from there, picked up cue from their leader, and a press conference was held questioning the alleged Congress links. Have a look. कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहाँ। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आज़ादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं,
तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हज़ारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? इस पर आईटी रेड हुई है, जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली है। जो तथ्य सामने आए हैं ये बड़े ही चिंताजनक हैं। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है? Right, BJP going after the Congress MP full force on the discovery of cash. Now we slip in a short break. On the other side, a comment under storm made by Kapil Sibal. According to him, Assam was part of Myanmar. Assam government, of course, hits back. Right after a short break.
Welcome back. A day after Kapil Sibal stoked a fresh controversy saying that Assam was originally a part of Myanmar in the Supreme Court, Assam Minister Piyush Hazarika has hit back, saying Sibal is poorly briefed and only speaks a left liberal view that tends to alienate the Northeast by conjuring such theories. Ironically, Sibal made that comment on a day when the Union Home Minister, in fact, said that the POK, Pak-occupied Jammu and Kashmir, actually belongs to India, and soon we'll have it. Let's look at the reactions that have come in. It cannot be mapped. No migration can ever be mapped. And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mullahs conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. And I'm talking about 1826, 1824, 1826. You can imagine the kind of movements of peoples that must have taken place in the context of रंजी का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको कुछ बात बोलना नहीं सही है। असम कभी म्यांमार का पार्ट नहीं था। म्यांमार से लोग आके असम को एक समय असम का साथ क्लैश हुआ था अहोम का समय में, एक फॉर ए ब्रीफ पीरियड हम लोग उनका ऑक्यूपेशन जैसा सिचुएशन था, 1-1.5 महीना का। इतना ही असम और म्यांमार का संपर्क है, लेकिन म्यांमार असम का साथ था ये तो कोई मुझको आज तक तो ऐसा कोई डेटा मेरा सामने नहीं आया है। देखिए, ये बहुत दुख की बात है। कपिल सिब्बल जैसा एक जाने माने एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का अंडर असम का हिस्ट्री इतना विकृत रूप से बोला है। असम म्यांमार का अंश है। ये कोई भी लोग, एकदम छोटा बच्चा भी, असम का कोई छोटा बच्चा भी जानता है असम का हिस्ट्री। एंड असम का जो हिस्ट्री, असमीज हिस्ट्री एक बहुत ऐसा हिस्ट्री है जो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कपिल सिब्बल जैसा एक लोगों ने यांडबू संधि का 1926 का बारे में जो बोला है, जो ये म्यांमार का एरिया था, ब्रिटिश ने थ्रू यांडबू संधि ये ले लिया है। मिनिमम नॉलेज उसको रहना चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए मैं उसको धिक्कार देता हूँ कि असम का बारे में कम से कम थोड़ा बहुत स्टडी करिए। बिना पढ़ाई, बिना स्टडी में असम का बारे में ये सब बोलना बहुत गलत है। और असमीज लोग का अपना सेंटिमेंट है। असम अतीजों से, मोर देन रामायण महाभारत युगों से असम भारत का अंश है, भारत से लगा हुआ है। और रामायण महाभारत का हिस्ट्री भी आप देखेंगे तब देखेंगे जे श्री कृष्ण जी ने शादी करने के लिए असम आया था। रुक्मिणी को शादी किया था असम आके। श्री कृष्ण का नाती यहाँ अनिरुद्ध ने आके यहाँ बान राजा का साथ लड़ाई हुआ था। वो सब हिस्ट्री उसको मिनिमम जानना चाहिए। और ये सब नहीं जानते हुए वो बोल दिया है जो असम म्यांमार का पार्ट है, ये बहुत दुखजनक बात है।